Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our research method master class. मैं हूं डॉक्टर लियाकत अली एंड इन दिस सीरीज़ हम रिसर्च मेथडोलॉजी को बेसिक कंसेप्ट से लेकर थीसिस राइटिंग और रिसर्च पब्लिकेशन तक स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। आज हमारा लेसन 5 है रिसर्च फ़िलासफ़ी एंड व्हाई इट मैटर्स इन रिसर्च। अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर रिसर्च फ़िलासफ़ी होती क्या है और रिसर्च करने के लिए फ़िलासफ़ी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन simple way. Research philosophy refers to a set of beliefs and assumptions about how knowledge is created, what reality is, and how we can know and understand that reality. Simple अल्फाज में रिसर्च फ़िलासफ़ी उन बिलीव्स और assumptions की कलेक्शन होती है जो ये गाइड करती है कि हम नॉलेज को कैसे हासिल कर सकते हैं, रियलिटी को कैसे देखते हैं, रिसर्च को किस अप्रोच से कंडक्ट करते हैं। थिंक ऑफ रिसर्च फ़िलासफ़ी एज अ पेयर ऑफ ग्लासेस। जिस तरह डिफरेंट ग्लासेस से दुनिया डिफरेंट नज़र आती है, इसी तरह डिफरेंट रिसर्च फ़िलासफ़ीज़ रिसर्चर्स को रियलिटी को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने में मदद करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बिलीव करते हैं कि रियलिटी कैन बी मेजर्ड ऑब्जेक्टिवली थ्रू नंबर्स एंड स्टैटिस्टिक्स, देन यू आर क्लोज टू पॉजिटिविज़म। लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं कि रियलिटी डिपेंड्स ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, पर्सपेक्टिव्स एंड सोशल मीनिंग्स, देन यू आर क्लोजर टू interpretivism. Research philosophy affects every stage of research. It influences what question we ask, how we collect data, which methods we use, how we analyze data, and how we interpret findings. Without a clear research philosophy, a researcher may choose inappropriate method and reach weak conclusions. In MPhil or PhD research, your philosophy acts like a road map. ये आपको गाइड करती है कि आपका वर्ल्ड व्यू क्या है और आपकी रिसर्च किस फाउंडेशन पर खड़ी है। एज रिसर्चर्स हम पहले ये डिसाइड करते हैं कि हम रियलिटी को किस नज़रिए से देख रहे हैं, उसके बाद ही हम रिसर्च अप्रोच, मेथोडोलॉजी और मेथड सेलेक्ट करते हैं। सो रिमेंबर दिस, रिसर्च फिलॉसफी इज़ द फाउंडेशन ऑफ रिसर्च. इट शेप्स आवर थिंकिंग, guides our decisions and determines how knowledge is generated and interpreted. I hope you enjoyed today's lesson. In our next lesson, we will discuss one of the most important research philosophies, positivism and its main features. If this lesson was helpful, please like, subscribe and share this series with your friends, students and fellow researchers. Thank you for watching. Allah Hafiz.